In this today's lecture, we are going to study about differential equations formulae. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें कई फंडामेंटल स्टैंडर्ड फार्मूले लोन होना चाहिए जिस फार्मूले के बेसिस पर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशंस फार्मूले. विदाउट वेस्टिंग वी विल स्टार्ट. छोटे छोटे फार्मूले हम आज देखने वाले हैं. तो पहला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n. इट मीन्स दैट फर्स्ट फार्मूला इज दैट d by dx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1. ओके, यहाँ x to the power n जो है हमारा फंक्शन है एंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम n into x to the power n minus 1 ले रहे हैं. इट्स मीन्स दैट जब हम फंक्शन का पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डेरिवेटिव पावर में डिक्रीज हो रहा है. n minus 1 is nothing but the decrement in the power. Okay, this is a basic and fundamental first formula of the differential equation. Next formula is that d by dx of x is equal to 1. Guys, a d by dx of x is equal to 1 ये कैसे आया? Do you know about that? Okay, मैं बताती हूँ. Listen carefully. First method is that method 1. हम ऐसे लिखते हैं d by dx of x is equal to dx by dx. यहाँ न्यूमरेटर में डायरेक्टली लिखे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 1 बिकॉज सेम क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी इन न्यूमरेटर सो दैट इट बिकम्स 1. एंड आवर सेकंड मेथड इज दैट मेथड 2 d by dx of x is equal to see here x का पावर नथिंग बट 1 है. इट मीन्स दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n एंड यहाँ n इज इक्वल टू 1 है. तो क्या हम यहाँ x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम यहाँ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो लेट्स सी क्या है हमारा फॉर्मूला x टू द पावर n का. n x टू द पावर n माइनस 1. इट मीन्स दैट हमें n की जगह 1 पुट करना है. तो क्या आएगा? n 1 x टू द पावर n माइनस 1. n क्या है? 1 एंड फार्मूले में जो 1 है वो माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इट बिकम 0 इज इक्वल टू किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है. 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू 1 is equal to 1. From this d by dx of x to the power 1 or d by dx of x is equal to 1. This is the most important formula. आपको समझ में आया क्या मैंने कैसे d by dx of x is equal to 1 प्रूव किया? See here. Next our third formula is that derivative of constant is equal to 0 where c is constant. Next fourth formula is that d by dx of square root of x. Guys, square root is nothing but half power. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d by dx of x to the power 1 by 2. तो आपको पता चला होगा कि यहाँ x to the power 1 by 2 है. इट मीन्स दैट x to the power n की फॉर्म में है एंड यहाँ n क्या है? n इज इक्वल टू 1 by 2. तो हम डेरिवेटिव ऑफ x to the power n का फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं. एक फर्स्ट वाला फार्मूला यहाँ हम यूज कर सकते हैं. ओके, तो क्या है x to the power n का फार्मूला? n x raised to n minus 1. See here, n is equal to half. तो half into x to the power n is nothing but half minus 1 is equal to 1 divided by 2 x to the power minus 1 by 2. It also can be written as half 1 divided by x to the power 1 by 2. It means that x to the power half is nothing but square root of x. It can be written as 1 divided by 2 into 1 divided by root x is equal to 1 divided by 2 root x. So d by dx of square root of x is equal to 1 divided by 2 root x. This is our third derivative formula. Now our fourth formula is that d by dx of 1 divided by x. Guys, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना d by dx of x to the power minus 1. यहाँ पावर नथिंग बट 1 है. इसे हम न्यूमरेटर में लिखने का ट्राई किए तो ये पावर माइनस 1 हो जाएगा एंड ये हम इस फॉर्म में देख सकते हैं x to the power n एंड ये n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू माइनस 1 x to the power minus 1. So we know that the formula of d by dx of x to the power n is equal to n x raised to n minus 1. So यहाँ n minus 1 है तो minus 1
into x to the power n minus 1 is equal to minus 1 x to the power minus 2 is equal to minus 1 as it is into 1 divided by x square. So it means that minus 1 divided by x square, that is d by dx of 1 divided by x is equal to minus 1 divided by x square. And this is our formula number 4th. Next, fifth formula is that d by dx of e to the power x. Sorry, that was our fifth formula, and it is the formula number 6. D by dx of e to the power x is equal to e to the power x. Means डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is equal to e to the power x, और इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x with respect to x is equal to e to the power x. Next formula is that formula number 7, d by dx of log x is equal to 1 divided by x. Next formula number 8 is that d by dx of a to the power x. इसका फार्मूला ऐसे आएगा a to the power x into log of a. कीप इट माइंड, ये a to the power x हम एज इट इज लिख रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई में log of base is nothing but a, ऐसे लिख रहे हैं. इट मीन्स दैट d by dx of a to the power x is equal to a to the power x into log of a. These are the fundamental formulae for the differential equation, and now we will see trigonometric functions formulae. जैसे कि हमें पता है sin x, cos x, tan x, cosec x, cot x, sec x, these are the trigonometric functions. इस फंक्शन के फार्मूले क्या होते हैं ये हम देखने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट रीडिंग trigonometric function differential equation formulae. differential equation formulae. ओके, इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला ए है d by dx of sin x. Derivative of sin x is equal to cos x. Next formula is that d by dx of cos x is equal to minus sin x. Third formula is that d by dx of tan x is equal to sec square x. Fourth formula is that d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. Fifth formula is that d by dx of sec x is equal to sec x into tan x. Okay, last formula is that formula number 6, d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. See carefully, derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is sec square x, derivative of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. Next, derivative of sec x is equal to sec x into tan x, and last, derivative of cot x is equal to cosec square x. It is a minus sign. Okay, next of this, here one trick is that, and that trick like ये ट्रिक आपको माइंड में कांस्टेंट रखने की है जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तब एक ट्रिक ऐसी है, जिस फंक्शन की स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है उसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमें निगेटिव में मिल रहा है. सी हियर, ये जो फंक्शन है cos x, उसकी स्टार्टिंग सी से हो रही है, सी लेटर से. जब हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें निगेटिव साइन मिल रहा है. ये देखो यहाँ निगेटिव साइन मिला है. सिमिलरली cosec x से हमारा फंक्शन है, जब हम cosec x का डिफरेंशिएशन लिए तो हमें निगेटिव साइन मिल रहा है. सिमिलरली जब हमने cot x का डिफरेंशिएशन किया तो हमें सेम डिफरेंशिएशन का निगेटिव साइन मिल रहा है. तो हम यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व किए ना, जिस फंक्शन की स्टार्टिंग सी से हो रही है उस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन निगेटिव साइन में आता है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सी हियर, cos x, cosec x and cot x having negative sign. It means that we can write as trick, सी लेटर से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव साइन में मिलता है. एंड एग्जांपल इज cosec x. सी हियर, जो फंक्शन हमारा
सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सी लेटर से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमें नेगेटिव साइन में मिल रहा है। सी इट इज अ कॉस फंक्शन एंड उसकी स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में मिल रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ कोसेक एक्स एक फंक्शन है एंड इसकी स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो वो डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव साइन में मिल रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉट एक्स आल्सो वी गेटिंग नेगेटिव फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दिस ट्रिक बिकम्स एज सी लेटर से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव हमें नेगेटिव साइन में मिलता है। फॉर एग्जांपल्स कोसेक एक्स, कॉट एक्स एंड कॉस एक्स। प्लीज keep these tricks in your mind. Guys, until now we have studied about some fundamental formulae related to the differentiation or derivative. After that we have studied trigonometric functions differentiation formulae, and now we are going to study inverse trigonometric differentiation equation formulae. हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, एज लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या होंगे, उसी फंक्शन का हमें इनवर्स लेना है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो क्या साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, लाइक दैट। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फार्मूले। सी नाउ हेडिंग इज दैट इनवर्स trigonometric differentiation formulae. Inverse trigonometric differentiation formulae. Okay, so now our first formula is that formula number 1, d by dx of sin inverse x is equal to 1 divided by square root of 1 minus x square. This is the first inverse trigonometric differentiation formula. d by dx of sin inverse x is equal to 1 divided by 1 minus x square. Next formula is that d by dx of cos inverse x is equal to minus 1 divided by square root of 1 minus x square. Next third formula is that formula number 3, d by dx of tan inverse x is equal to 1 divided by 1 plus x square. Next fourth formula is that d by dx of cot inverse x is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. Okay, next formula number 5 is that d by dx of sec inverse x is equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1. Formula number 6 is that d by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 divided by x into square root of x square minus 1. Okay, these are the inverse trigonometric differentiation formulae. First formula is that derivative of sin inverse x is equal to 1 divided by 1 minus x square. Okay, and second formula is that d by dx of cos inverse x is equal to minus 1 divided by 1 minus x square. Okay, third formula is that d by dx of tan inverse of x is equal to 1 divided by 1 plus x square. Fourth formula is that d by dx of cot inverse x is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. After that, fifth formula is that d by dx of sec inverse x is equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1. And last, sixth formula is that derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 divided by x into square root of x square minus 1. All these are the inverse trigonometric differentiation formulae. Now we will see differentiation rule. So next heading is the differentiation rule. Differentiation rules. So guys, first rule is that d by dx of k into u. See here, k is our constant and u is nothing but function. So is equal to k into d by dx of u. It means that when we calculating derivative of constant into function, that time we need to take constant as it is into derivative of that function. Here k is equal to constant and u is function. Okay, next rule is that rule number 2, d by dx of
u plus or minus v. Guys, here u and v both are the functions. Guys, here when we taking addition or subtraction of both functions, that time we use rule like d by dx of u plus or minus d by dx of v. It means that हमें both function का separate addition और separate subtraction लेना है. Are you getting this? Next, third rule is that d by dx of u into v. And this rule is called as product rule, because here there is a product of both function u and v is equal to u into d by dx of v plus v into d by dx of u. It can be read like first function as it is into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function. Means u is our first function and v is our second function. And fourth rule is that d by dx of u by v. Here u is our first function and v is our second function, so is equal to v into d by dx of u minus u into d by dx of v whole divided by v square. It means that u is our first function and v is our second function. From this, second function as it is into derivative of first function minus first function as it is into derivative of second function whole divided by square of second function. Guys, now we are going to next point, and that point is chain rule. See here, this is chain rule. Guys, chain rule इस नेम से ही हमें पता चल जाता है कि चेन रूल क्या है. ऐसा रूल कि जो चेन की फॉर्म में हमें दिखता है, चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, सच रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल. नाउ वी विल सी format of the chain rule. First chain rule is that dy by dx is equal to dy by dx. ये हम ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ हमने राइट साइड में dt से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया dt, तो इस इक्वेशन पर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है. मीन्स वी आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग सेम टर्म, इट बिकम्स एज इट इज. ओके, इट कैन बी रिटर्न एज dy by dt into dt by dx. ओके, सी हियर, ये dx हमने यहाँ रिप्लेस किया एंड ये dt हमने यहाँ रिप्लेस किया, सो दैट आवर चेन रूल बिकम्स dy by dt into dt by dx. It means that dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. This is the first chain rule. Okay, are you getting this? यहाँ हमने dy by dx लिया है इज इक्वल टू dy by dx एंड सिर्फ dt ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है एंड उसे रिप्लेस की है उसकी पोजीशन. तो dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. This is the first chain rule. Second rule is that dy by dx is equal to dy by dx. यहाँ हम d by dt एंड du by du से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट कैन बी रिटर्न एज dy by, इसकी पोजीशन हम रिप्लेस करेंगे, dy by dt इंटू dt by dx into du by du. Again we are changing this position and this position, then dy by dt into dt by du into du by dx. It means that our first equation becomes as it is. See here, dy by dt into dt by du. Dt get cancelled. Here also du by du get cancelled. It means that dy by dx is equal to dy by dx. So from this it can be written as dy by dx is equal to dy by dt into dt by du into du by dx. This is our second chain rule. In similar fashion, we can written as chain rule third. See, dy by dx is equal to dy by dx. Here we are multiplying and divide by dt, du and dw terms. Firstly, we will divide and multiply by dt into dt into du divided by du into dw divided by dw. From this, it can be written as, ये हम पोजीशन चेंज करेंगे, dy
by dt into dt by dx into du by du into dw by dw is equal to, now we changing this position, second position and third position in denominator, that is dy by dt into dt by du into du by dx into dw by dw. Okay, up to this clear? Now we changing third and fourth denominator position. We will get, from this we will get dy by dt into dt by du into du by dw into dw by dx. Guys, see carefully, from this dt cancel, du cancel, dw cancel. It means that our entire equation becomes as dy by dx. Okay, initially we have considered that dy by dx here. So fourth chain rule can be written as dy by dx is equal to dy by dt into dt by du into du by dw into dw divided by dx. This is the fourth chain rule. Fourth chain rule is that dy by dx is equal to dy by dt into dt by du into du by dw into dw by dx. It means that dy by dx is equal to dy by dx by cancelling this term. Okay, this is the fourth chain rule. Now we will see important formulae related to the differential equations. Okay, see carefully important formulae. Okay, now our first formula is that d by dx of f of x to the power n. गाइस, ऑलरेडी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक फार्मूला देखा था. वो फार्मूला ऐसा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n. क्या था वो? हियर आई एम राइटिंग d by dx of x to the power n into x to the power n minus 1. जो हमारा x का पावर था वो 1 से डिक्रीज हो रहा था. ओके, सेम फॉर्म यहाँ भी है. तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन टू द पावर n कैसे एक्सपांड कर सकते हैं? सी हियर n is a power of that function. It means that differentiation of f of x to the power n is equal to n into फंक्शन का पावर डिक्रीज हो रहा है 1 से, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन. गुड वन. इट मीन्स दैट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पावर n is equal to n f of x to the power n minus 1 into differentiation of that function. Correct. This is the first important formula. Next of this, second important formula is that d by dx of square root of function is nothing but differentiation of function raised to 1 by 2 is equal to, guys already हमें ये पता है ना, differentiation of square root of x is equal to 1 divided by 2 into square root of x. Same here, we can use this. Differentiation of square root of f of x is equal to 1 divided by 2 square root of f of x into differentiation of this function. Correct. This is the second formula. Now our third formula is that differentiation of 1 divided by function. Guys, similar formula we have studied, which is like differentiation of 1 by x. d by dx of 1 by x is equal to minus 1 divided by x square. फंक्शन का जो फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव हमें ऐसे मिल रहा था निगेटिव पावर में. ये निगेटिव पावर है, तो हमें यहाँ यूज करना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे क्या एक्सपांड कर सकते हैं? सी केयरफुली, नेगेटिव साइन 1 डिवाइडेड बाय f of x square into differentiation of the function. Okay, this is our third formula. गाइज, ये सीधे फार्मूले है जो पहले हम स्टार्टिंग में लेक्चर के फार्मूले देखे थे, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस फार्मूले. दैट फार्मूले का यूज करके हम एक्सपांड कर रहे. इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. ओके, वी आर ओनली एक्सपांडिंग बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस फार्मूले. आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा. नाउ आवर फोर्थ फार्मूला इज दैट d by dx of log of f of x, बिकॉज यहाँ हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं. गाइज, ऑलरेडी यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equal to 1 by x. So here, by using that formula, differentiation of log of f of x is equal to 1 divided by f of x
into differentiation of f of x. Okay, correct. Now fifth formula is that d by dx of e to the power f of x. Okay, guys, already you know that differentiation of e to the power x is equal to e to the power x. बट यहाँ e टू द पावर x की जगह क्या दिया है, e टू द पावर f ऑफ x दिया है. मतलब x जो वेरिएबल था, जो फंक्शन था, वो f ऑफ x फंक्शन से रिप्लेस किया है. तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? इट बिकम्स e टू द पावर f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f of x. Okay, and this is our differential equation formula. Now we will see a trigonometric functions formula. Formula 6 is that d by dx of sin f of x. Okay, similar formula like that differentiation of sin x is equal to cos x हमने देखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला है. तो यह क्या चेंज हो रहा है, x की जगह पे f ऑफ x फंक्शन रिप्लेस किया है. तो जब हम sin f ऑफ x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ऐसे आएगा cos f of x into d by dx of function. Means this formula differentiation of sin f of x is equal to cos f of x into differentiation of function. Okay, next formula number 7 is that differentiation of cos f of x is equal to, already we know that differentiation of cos x is equal to minus sin x. So here minus sin f of x into differentiation of that function. Okay, guys, now formula number 8 is that differentiation of tan f of x is equal to what? Already we have know that differentiation of tan x is equal to sec square x into differentiation of x. Similar that differentiation of tan f of x is equal to sec square f of x into d by dx of function. Here function is f of x. This is the formula number 8. Okay, now next formula is that d by dx of cosec f of x. In similar way, we know that differentiation of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. Okay, then यहाँ एक्सपेंशन क्या होगा इस डिफरेंशिएशन का? माइनस कोसेक f of x into cot f of x into d by dx of f of x. Okay, this is the formula number 9. Next formula is that d by dx of sec f of x. Already we know that differentiation of sec x is equal to sec x into tan x. In similar way, differentiation of sec f of x is equal to sec f of x into tan f of x into differentiation of function. It's a very simple formula. We are deriving this formula by using our standard trigonometric differential equation formula, जो अभी इस कंसेप्ट के पहले हमने देखे थे स्टार्टिंग में लेक्चर के. उस फार्मूले का हेल्प करके हम ए इक्वेशंस और ए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सपेंशन कर रहे हैं. नेक्स्ट फार्मूला इज दैट d by dx of cot f of x. Guys, already you know that differentiation of cot x is equal to minus cosec square x. Okay na? In similar way, differentiation of cot f of x is equal to minus cosec square f of x into d by dx of function. This is formula number 11. Friends, until now we have learned about the differential equation formula for the trigonometric functions. And now onwards we are going to study differential equation for the इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपको पता है जैसे कि tan x, cos x, sec x. बट इनवर्स मतलब क्या? उसका रेसिप्रोकल रहना है. एज लाइक दैट sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, लाइक दैट. ओके, सो लेट्स सी नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल फार्मूलेज. सी फार्मूला नंबर 12, d by dx of sin inverse f of x is equal to what? Guys, already we have studied that differential formula for the sin inverse x is equal to 1 divided by square root of 1 minus x square. ये फार्मूला था. तो इन सिमिलर वे यहाँ भी sin इनवर्स f of x है. जस्ट यहाँ हमने f of x को x से रिप्लेस किया था. ओके ना? देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सपेंशन क्या होगा? एज लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, we can write this
1 divided by square root of 1 minus f of x square into d by dx of function. Okay, this is the formula number 12. Formula number 13 is that d by dx of cos inverse f of x. Friends, you know that differentiation of cos inverse x is equal to minus 1 divided by square root of 1 minus x square. In similar fashion, here minus 1 divided by square root of 1 minus f of x square into d by dx of function. Okay, दिस इज फार्मूला नंबर 13. एंड गाइज मैंने एक ट्रिक्स बताई थी, जिस फंक्शन की स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है उस डिफरेंशिएशन के टर्म में नेगेटिव साइन आएगा. लेट्स सी हियर, यह हमारा फंक्शन है एंड इस फंक्शन की स्टार्टिंग सी से हो रही है, तो हम जब उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन में मिलेगा. हियर सी हियर, दिस इज अ नेगेटिव साइन. ओके, नेक्स्ट फार्मूला नंबर 14 इज दैट डी बाय डी एक्स ऑफ tan inverse f of x. d by dx of tan inverse f of x. Guys, already you know that differentiation of tan inverse x is equal to 1 divided by 1 plus x square. In similar fashion, differentiation of tan inverse f of x is equal to 1 divided by 1 plus f of x square into d by dx of function. Okay ना? It's very simple formula. हम यहाँ न्यू कुछ नहीं कर रहे, जस्ट जो हमने फार्मूले फंडामेंटल्स फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़े थे, उसका पढ़ाई किए थे ना लेक्चर के स्टार्टिंग में, उसी फार्मूले का उसी कंसेप्ट का यूज कर कर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सपांड कर रहे. दैट्स इट. इट्स वेरी सिंपल. जब आप लोग एक दो बार उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली आ जाएगा. नेक्स्ट फार्मूला नंबर 15 इज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स. Guys, you know that differentiation of cot inverse x is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. So, in similar way that minus 1 divided by 1 plus f of x square into d by dx of function. See here also, ये हमारा जो फंक्शन है cot inverse f of x, यहाँ जो हमारा फंक्शन है cot inverse f of x, इसकी स्टार्टिंग c से हो रही है. इट मीन्स दैट उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के बाद उसके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा. सी हियर, दिस इज अ नेगेटिव साइन बिकॉज जिस डिफरेंशियल फंक्शन की स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है उसके डिफरेंशिएशन के आंसर में नेगेटिव साइन आएगा. दैट इज अ ट्रिक्स एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट इज दैट फार्मूला नंबर 16 d by dx of sec inverse f of x. What is the formula for differentiation of sec inverse x? It's very easy na. That formula is 1 divided by x into square root of x square minus 1. In similar fashion, differentiation of sec inverse f of x is equal to 1 divided by f of x into f of x square minus 1 into differentiation of f of x. Okay, this is formula number 16. Next formula is that formula number 17, d by dx of cosec inverse f of x minus 1 divided by f of x into square root of f of x square minus 1. Okay, into multiplication में differentiation of function. Good one. And this is formula number 17. Okay, are you getting this? And guys, here also see, we have ऑब्जर्व दैट ऑलरेडी जिस फंक्शन की स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है उसके डिफरेंशिएशन के फार्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है. सी हियर, फंक्शन की स्टार्टिंग सी लेटर से हो रही है एंड देन नेगेटिव साइन कमिंग इन द पिक्चर. ओके guys, in this lecture we have studied so many differential equations form, some tricks, some basic formulae, some fundamental formulae, and chain rule, successive differentiation formulae, and trigonometric differentiation formulae, and also we have studied that inverse trigonometric differential equation formulae. Okay, now we will see some differentiation, how we will get the differentiation of that function. See, if we have given that equation 18 d by dx of y, ये क्या आएगा, यहाँ हमारा x वेरिएबल है एंड फंक्शन क्या है, y है. इट मीन्स दैट इट कैन बी रिटन एज dy by dx. ओके, नाउ if they give function y square and variable x, see here y square is equal to में क्या आएगा, see this is a d by dx of y square. It means that differentiation of y square क्या आएगा. Guys, already you know that ना, formula for differentiation of x to the power n क्या था, n into x to the power n minus 1. डिफरेंशिएशन में पावर 1 से माइनस हो रहा था, 1 पावर डिक्रीज हो रहा था. ओके ना. इन सिमिलर वे वी कैन राइट वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ
x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ओके ना, तो यहाँ हम ऐसे एक्सपांड कर सकते 2 इंटू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पावर नथिंग बट 1 है। ओके, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट 20 नंबर, ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है एक्स वेरिएबल है एंड फंक्शन वाई क्यूब है, तो क्या आएगा, सी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज नथिंग बट वाई का पावर थर्ड, 3 पावर, इंडेक्स में 3 आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, सेम रूल यूज करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इन सिमिलर वे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 3 इज इक्वल टू एन क्या है 3 है, 3 इंटू वाई टू द पावर एन क्या है 3 माइनस जो फार्मूले में 1 है वो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो यह क्या आएगा 3 इंटू वाई 3 माइनस 1 2, 3y square into dy by dx. Okay ना, it means that d by dx of y cube is equal to 3y square into dy by dx. It's very simple. जो फंडामेंटल फार्मूले है उसके बेसिस पर ही हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सपेंशन करना है। इट्स वेरी इजी, प्लीज प्रैक्टिस ऑन दैट। इफ यू हैव सम क्वेरीज, सम क्वेश्चन, सम सिली डाउट्स, please let me know. I will give you a solution. And please watch this video and share with your all friends. Thank you very much. Thank you.